आइए कहानी में कुछ नए मोड़ जोड़ते हैं. A very good morning to the array of supernovas of our distinguished guests, renowned speakers, invited dignitaries, Madam Principal, members of the teaching faculty, members of the non-teaching staff, and our delegates who have assembled here today to witness the confluence of ideas, thoughts, insights brought together under the canopy of Soul in Symphony, a journey of happiness through self-actualization and self-realization. A 2-day multidisciplinary international conference that we shall witness, delve, and relish today and tomorrow. The conference shall prove to our gathering that human understanding has derived multifarious means to understand the self, actualize its potential, and explore resources for its well-being and happiness. As we commence on the 2-day expedition, let us make our dear audience witness a part of our institution's journey and mention some of the achievements of our eminent establishment. Dear audience, before we introduce our college and its achievements, we feel pleased to share with you that this year marks the celebration of the bicentennial birth anniversary of Swami Dayanand Saraswati Ji, an Indian philosopher, social leader, and founder of the Arya Samaj, and one of the makers of modern India, who rooted the path of self-realization by going back to the Vedas. Meherchand Mahajan, DAV College for Women, affiliated to Punjab University, was established in 1968 in the memory of Justice Meherchand Mahajan, the third Chief Justice of India and former Prime Minister of Kashmir, who made an exemplary contribution in the field of education, nation building, legal system, and DAV management. The foundation stone of the college was laid by the then Vice President of India, Dr. V.V. Giri. Since then, the college has shown phenomenal growth and stands as an epitome of excellence and commitment in the field of higher education under the able guidance of our President of DAV College Managing Committee, Dr. Poonam Suri Ji, Padma Shri awardee. Team MCM is truly beholden to our visionary managing committee helmed by our worthy president, who has been our inspiration and has always encouraged us to achieve pinnacles of success in a meaningful manner in the field of higher education. The college celebrated its historic 50 years with fanfare, the landmark embossed golden letters with the Honorable President of India, Shri Ram Nath Kovind Ji, visiting the college in February 2018, thereby turning the celebrations into an epoch-making event. The Golden Jubilee Block, where we proudly sit today, germinated and blossomed in the successive years. We take immense pride in sharing with you that the college was re-accredited with grade A by NAC in 2023, and MCM was ranked among the top 74 institutes in India by National Institution Ranking Framework in 2017, and finds a place of pride in rank band 101-150 in the NIRF rankings 2023. We feel honored to share with you that our college ranks as one of the top colleges in the streams of arts, science, commerce, and mass communication in the surveys conducted by top magazines like India Today, Outlook, and The Week. The Institution Innovation Council was awarded 4 stars by the Ministry of Education, Government of India. It is a matter of pride that our college received the highest grade in the region under National Rural Institutions Sustainability Grading by the Ministry of Education, Government of India in 22-23.
As the college received the Green Audit Certificate, its committed goal of sustainable practices were well recognized in the shape of Best Herbal Garden in 22 and 23 by the Department of Environment, Chandigarh Administration. The college also has first rank of being the cleanest residential college in the National Swachh Campus Ranking 2018, where it competed with 6,000 other colleges. Our consistent effort in promoting and maintaining Swachhata led to college bagging first prize in Swachh Office category and Swachh Award during the Swachh Sarvekshan 2022. The institution derives immense pride in sharing its commitment to the cause of Swachhata, which earned its coveted third rank in India under citizen-led initiatives. MCMDAV is recognized for its sustainable campus, social entrepreneurship, rural engagement, vocational education, the Ventel Action Play by MGNCRE, Department of Higher Education, Ministry of Education, Government of India. Our institution is a registered skill provider on the portal of National Skill Development Corporation, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Government of India. Our NSS volunteers have showed exceptional devotion towards duty, which reaped fruits as the NSS units of the college bagged the Best NSS Unit Award in the years 2017-18 and 21-22 by the Department of Education, Chandigarh Administration. Also, the Best Program Officer in 22-23 and Best NSS Volunteer State Award in 22-23. We feel even more proud to share with you that the college received the Curie Core Grant for Women PG Colleges from the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, Government of India. The institution is nominated by the Ministry of Food Processing Industries, Government of India, as the only technical institution in Chandigarh for providing training in bakery and food processing. The college is registered on international portal of AICTE, Ministry of Education, Government of India for foreign students seeking higher education in India. Year after year, our students make our hearts swell with pride through their exceptional performance in Punjab University semester examination. Give yourself a round of applause, for the college has more than 100 top 10 positions in Punjab University examinations for the session 22-23. Our college hosted the Punjab University Zonal Youth and Heritage Festival in 2023 with energy, enthusiasm, and dedication that stayed true to its effervescent spirit. It won accolades in different events and also won the overall first runners-up trophy. The institution is the winner of Punjab University Women's General Efficiency Sports Shield 40 times in its existence of 54 years, which deserves plaudits. Our students have won accolades for the college in various sports tournaments at national and international level. We have 4 cricketers in the women's cricket team India: Harleen Kaur, Tanya Bhatia, Amanjot Kaur, and Ridhima. Tanya Bhatia and Harleen Dole have done us proud by also playing in the Commonwealth Games and the World Cup. Apurva represented us in the Uganda International Challenge Badminton Tournament in Kampala, held in February 23, and won the bronze medal in women's doubles. Our ace shooter Raiza extracted a rich haul by winning gold in the junior skeet teams and mixed team, and went on to clinching a silver in the Asian Shooting Championship. The fact that she has qualified for the 2024 Olympics is a cherry on the cake. Our golfer, Hina Kand, has been making her mark in the field of golf and participated in the International Golf Tournament in 2023. Our sports achievements are indeed humongous. Ms. Ishika Goel participated in 2 events of square martial arts
In 37 national games organized by the Indian Olympic Association, she clinched a gold and a bronze medal, phenomenally winning a cash prize of rupees 10 lakhs. During the Khelo India Games 2023, out of 52 medals won by Punjab University, 15 medals were bagged by our students, which again deserves a big round of applause. Our illustrious alumni make us proud across the globe and share a strong bond with their alma mater. They keep contributing in the growth and excellence of their parent institution. MCM alumna Ms. Dilshad Anand, IES, is the third Secretary Economic in Embassy of India, Washington, D.C., USA. Our alumna Tavishi Kumar became the youngest recipient of the Indo-American Leadership Award 2022. Our student Purujit Kaur was appointed at the UN Women's Security and Safety Services at New York. Our students Gursimranjit Kaur, Roopdeep Kaur and Priya Khera cleared their Punjab State Civil Services Combined Competitive Examination in 2020. Our alumnus keep making us proud by securing national rankings in various competitive examinations. Bazila Javeed secured rank 56 and Ms. Athira Jamwal got rank 20 and Ms. Shreya Slatia rank 52 in J&K Administrative Services 2023. At this juncture, I am delighted to share with you that our student Ojaswini was awarded by Honorable Home Minister, Government of India, Shri Amit Shah, for her exceptional work in spreading awareness under Cyber Swachhata Mission. Our research endeavors multiply every year as we keep adding to the existing colossal body of research publications and scholarships. This college has signed MOUs with reputed institutions and industries to enhance the skills and employabilities of its students. We have a tie-up with the Mai Bhago Armed Forces Preparatory Institute and Chandigarh Police, and we feel proud to share that many students have been selected in the Indian Army and the Indian Air Force. The placement cell of the college has played an instrumental role in the successful recruitment of hundreds of promising students every year in various prestigious corporate houses. Our uniqueness also lies in promoting and sustaining urban farming. Our in-house produce is generously shared with the teaching, non-teaching and support staff members of the college. The abundance of organic produce mirrors our commitment to adopting sustainable initiatives and healthy lifestyle practices. Our sustainable initiatives go a long way in paving our constructive approach towards sustainable living and beyond, which include e-waste management, compost units, oyster mushroom cultivation, and much more. In order to keep our cultural and spiritual legacy alive, we make concerted efforts to connect our students with the rich heritage through various events, activities, and competitions. In order to promote Vedic values, we have been organizing havans to seek divine blessings. Recently, a 200 Kundiya Havan was organized to commemorate the 200th birth anniversary of Swami Dayanand Saraswati Ji. The college is traversing the path of feathering exceptional strokes and achieving newer milestones of academic excellence, professional commitment, and holistic development of students under the dynamic visionary Dr. Nisha Bhargav, principal of the college, who is a gold medalist in economics and PhD with specialization in energy economics. Madam is the Vice President of Chandigarh Athletic Association, Member Senate, Punjab University, Vice President RS Samaj Chandigarh, Member State Level Quality Assurance Cell, Department of Higher Education, Vice President of the Punjab University Sports Committee, to name a few. She has to her credit a number of national awards for her exemplary and state-of-the-art contribution to the field of sustainable development, comprehensive education,
community outreach programs, and gender sensitization. Our institution has achieved significant milestones, and we are deeply committed to taking it to the zenith of success. On this note, I welcome you all again to the portals of this glorious institution. As we instate the conference, I would request the co-convener of the conference and head Research Center Postgraduate Department of English, Dr. Mridula Sharma, to please present the concept note of the conference and introduce our galaxy of distinguished speakers. Thank you. Thank you, Dr. Komil. Good morning, ladies and gentlemen. I welcome you all to the two-day multidisciplinary international conference, Soul in Symphony, Journey to Happiness through Self-Actualization and Self-Realization, being organized under the aegis of Directorate, Higher Education, Chandigarh Administration. The august audience would be glad to note that this conference is second in the series of what is fondly known at MCMDAV as the Happiness Conference. The first one was held in 2018, the Golden Jubilee year of the institution, titled The Soul in Symphony, Spiritual and Pragmatic Aspects of Happiness. This conference was very well received, and with an array of international speakers, it attracted participation and paper presentations from delegates across India and abroad. Preparations for NAC visit and the pandemic before it pushed the second conference a little further than we planned. But here we are with the second edition, while we are celebrating the bicentennial birth anniversary of Swami Dayanand Saraswati Ji, carrying forward the tradition of excellence so firmly entrenched in MCM culture. The concept of the present conference is that the eminently Western idea of self-actualization, which primarily focuses on the external world, can be seamlessly synthesized with and be better built on the foundation of the Indian concept of self-realization. This confluence of the East and the West can result in better integrated individuals, especially in the scenario where material success is somehow viewed as antithetical to one's inner quests. The audience would perhaps agree with me that we need to move beyond this segregation of the internal and the external, especially because more and more job profiles aim at homogenizing us, providing us with pre-written scripts that need to be committed to memory and parroted at the right junctures, requiring responses that border on the robotic with stiff competition from the AI. The American poet R.W. Emerson once wrote that to be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment. Written almost 150 years back, these lines ring true today more than ever. The Indian sage Ramana Maharishi has recommended self-inquiry as the principal means to remove ignorance. Our own self-realization is the greatest service we can render the world, he said. If we practice self-inquiry leading to self-realization, the world at the macro level will be a better place because the micro elements, that is, the individuals, would know themselves and their relationship to the environment around them. This integration would enable each one of us to create our unique story through our strengths and passions, and as Rumi said, unfold our own myth. कहा गया है कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में राहजन हैं इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा.
Imagine a life created in tandem with our inner truth. Undeniably, it would be a thing of beauty and a source of perennial joy. This concept came to us as gently as a dewdrop one day and trembled in the eye of the mind, exciting but uncertain. A little protective about it, we deliberated on it for some time. Was it a befitting idea for a conference? Did it have any weight beyond its beauty? Did it hold the promise of possibilities in the academic world? Would there be something in the lives lived around us that could exemplify what the philosophy propounded? Soon, however, our explorations led us to the numerous real stories all around us. So many gleaming, shining lives burnished by self-realization, flowing in a quiet symphony toward actualization and achievement. We realized that the dewdrop was in fact an ocean of experience and endeavor, of courage and triumph after pain and struggle, of expansion beyond boundaries, of beauty born out of ordinariness, of creativity emerging from within the pits of despair and destruction, of the divine surrounded by the mundane. All inspiring journeys in spite of social constructs, prejudices, and limitations. We came across soldiers who had heard their inner calling and fought bravely despite the odds, refusing to accept anything but victory. We came across a monk who lived in the peaceful hermitage of his mind, but refused to be a recluse and chose to devote his education and energy to the larger good of mankind. We became acquainted with a scholar who crossed the 7 seas to embrace the philosophy that answered her questions and found happiness in becoming a yogini, singing Sanskrit verses on a guitar. There were some negotiating the complexities of their body and the obstructions it sometimes caused, nevertheless expressing themselves through art and sports, triumphing so beautifully that the stumbling block became the foundation stone. Others found ways to keep the body healthy to maximize joyful living. There were also the creative artists who translated the tediousness of everyday life into vibrant colors, soulful songs, and mesmerizing cinema frames. Like I mentioned before, it is a vast ocean. We have brought together some of the strands for this conference to make the deliberations meaningful. Ladies and gentlemen, 24 speakers from diverse fields are going to grace this conference in the span of 2 days. Here I am tempted to quote Gurudev Rabindranath Tagore when he calls the various forms of life as myriad notes created by the Creator as part of one grand song. The underlying idea that I want you to note, dear audience, is that myriad notes can create striking symphonies. With this fond hope, I now introduce the esteemed speakers for the inaugural session. To deliver the presidential address, we have the honor of having with us Brigadier Dr. Rajiv Sethi, advisor to the FI Group and professor of practice. As advisor, he has visited all the 11 universities of the group over the last year to carry out the assessment of the leadership standards and suggest measures to overcome the shortcomings. His illustrious career, however, began in the armed forces when he was commissioned into the artillery to be later converted to army aviation. In his wide-ranging experience, he has flown in all terrains as a helicopter pilot and plumbed the ocean as a deep-sea diver. He has been a part of large number of operations, including peacekeeping mission in Sri Lanka, Operation Bajrang, Operation Vijay, and Operation Parakaram. He commanded his regiment in a highly terrorist-infested area in Jammu and Kashmir and his brigade in the northeast. In addition to this, he has been a part of Cabinet Secretariat handling a special forces sector in the northeast. For his exceptional performance, he has been awarded Chief of Army Staff and Army Commander commendations
for exhibiting exceptional performance beyond call of duty at 5 different sectors. Brigadier Dr. Rajiv Sethi is an alumnus of National Defence Academy, Indian Military Academy, and Defence Services Staff College. Academically, he holds an MSc degree in Defence Strategic Studies, an MPhil in International Relations, specializing in diplomatic studies from JNU, and a doctorate in finance. A natural leader, he has handled administration of a number of AWES education institutes as chairperson. As senior instructor in military faculty of doctrine and tactics, he has imparted training to senior military officers of combined armed forces. He joined the ICFI group in 2018 and is actively engaged in streamlining the work of ICFI universities. Discipline is his motto, and he believes in leading by example. A forceful speaker who spells conviction, he is eagerly sought after to deliver motivating talks to eclectic audiences. In the school of life, he has learnt about human nature, customs, and cultures during his travels spanning about 60 countries. We are beholden to Brigadier Dr. Rajiv Sethi for sparing some of his valuable time to deliver the presidential address. Ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome Brigadier Dr. Rajiv Sethi. I'm sure the audience today would greatly benefit from his observations. Our keynote speaker, Dr. Samdhu Chetri, is a professor, senior director, and mentor at Shulini University, Himachal Pradesh. A PhD in commerce, he has also worked in private and development sectors for 25 years. He joined the PMO Bhutan thereafter, where his focus was promoting good governance. He helped in the formulation of national projects through support in Bhutan for training in spiritual practice. Dr. Chetri has extensive experience in teaching at IIT Kharagpur and several universities in NCR, Delhi. Ecology and climate action are the other projects very close to his heart. His belief is that we connect with nature first by understanding and experiencing ourselves as nature. However, happiness and well-being are Dr. Chetri's core goals. He founded the Gross National Happiness Center Bhutan and headed it for 5 years. He has been teaching, consulting, and speaking at various international and national occasions on mindfulness and happiness. Dr. Chetri has been an inspirational speaker on gross national happiness at many global and Indian universities and colleges. He has delivered talks at the House of Commons in the British Parliament and to the senators in the Philippines. Dr. Chetri has traveled extensively in countries like the USA, Singapore, UK, Hong Kong, Philippines, Switzerland, Denmark, Sweden, Germany, Mexico, Vietnam, Thailand, among others, to expound his ideas on joyful, integrated living. The BBC, ABC, ABS, CNN, and various other TV channels have interviewed him to acquaint the masses with his ideas. Dubbed by the BBC as the happiness guru, his journey as a pilgrim of love and compassion continues. Please let's have a welcoming round of applause for Dr. Samdhu Chetri. Sir, on behalf of the staff and students of MCMDA College for Women, I extend you our heartfelt gratitude for being with us today as the keynote speaker. Our guest of honor, Professor Satish Kumar Verma, is an academician with long and illustrious career at Punjabi University, Patiala. Presently, he is Professor Emeritus Desh Bhagat University, Mandi Gobindgarh. Apart from his doctorate in Punjabi, Professor Satish Verma has a master's degree in English and Hindi as well. Not to forget that he is very well versed in Sanskrit as well. His areas of specialization are drama and theatre, radio, television, cinema, folklore and culture, comparative studies, children literature, lexicography and translation. Professor Verma has more than 71 published books. Amongst his books based on research, criticism, translation and creative writing are Brecht Ate Punjabi Natak, Puran Singh Diya Yada, Manchan Natak, Punjabi Naat Chintan,
पंजाब दी लोक नाट परंपरा, नौमे दहाके दा चोला नाटक, एकांगी यात्रा, and Harcharan Singh दी नाटक कला. Many of the plays written by him are part of the course books of Punjabi University, Patiala, Guru Nanak Dev University, Amritsar, Kurukshetra University, and the ICSC at postgraduate, undergraduate, and school level. Sir has been actively involved in theatre for the last 4 years. He has been running a reputed theatre group of Punjab, Manchvati, and its children theatre wing. He has directed 60 plays and acted in more than 100, which have been performed all over India and abroad. He has received Best Director awards and awards for production and acting from several reputed associations. Little wonder then that Professor Verma is a celebrated name in Punjabi theatre. Not only this, he has presented programs at Doordarshan, All India Radio Jalandhar, Patiala, and Delhi, and private video channels too. Shows and films by him have received many awards, including the National Award of Doordarshan multiple times. He was awarded the Sahitya Academy Prize in 2012, Shiromani Natakar Award 2019 by Government of Punjab, National Level Award by Sahitya Kala Parishad Delhi, National Level Award by Hindi Sahitya Samiti, and Punjab Sangeet Natak Academy Award, to mention a few. Professor Verma's mission is to promote Punjabi language, literature, and culture at global level through various media. Please put your hands together to extend a hearty welcome to Professor Satish Verma. We are grateful to him for being with us today and are eager to listen to his thoughts on the topic of the conference. Our next guest of honor is a multidimensional woman. Commandant CRPF, Srimati Sisodia. A BSc in Physics from Delhi University and an MBA from Symbiosis, Pune, Srimati Sisodia joined the CRPF as Assistant Commandant. Her diligence and commitment during her inspiring career has earned her many accolades. Glance through some of the awards won by her amply illustrates the areas of her interest and achievement. She is the recipient of Virangana Samman Award on the birth anniversary of Rani Lakshmibai, Mahatma Gandhi Seva Award, Jodha Bhai Nari Shakti Puraskar, Padma Welfare Award, Woman of Earth Award, Environment Conservation Awards, Motivation Icon Award, Rashtra Rakshak Samman, Mahila Gaurav Samman, to name a few. Environment and the problems of less privileged, including the Divyang, are some issues very close to her heart. As an environmentally responsible citizen, she has used her leadership role to plant thousands of trees so far. However, she believes in planting the seeds of awareness in the minds of young girls and women about their rights and strengths, while stressing upon the need for empowerment through financial independence. Her efforts at rehabilitation of tribal and rural women, as well as rape and acid attack victims, have earned her recognition far and wide. She has authored a book titled Skill in Transmission, which is said to be the first of its kind in its niche. She is a motivational speaker of international repute on topics such as healing life and relationships, time management, drive, and her voice has made a difference to the lives she has touched. Ladies and gentlemen, let's extend her a loving welcome with the certainty that her address would ignite many minds today. On behalf of the staff and students of the institution, I express our thankfulness to her. I also extend a warm welcome to all distinguished guests who are with us today. I welcome Professor Mohan, Professor Emeritus, Department of Psychology, Punjab University. Our keynote speaker at our previous conference on happiness, sir, is the link between both our endeavors. A hearty welcome to Dr. Aviva Robibo, teacher of advanced meditation from Kulu, Ms. Indira Nayak, famous Sufi singer from Mumbai, the other participating delegates from various institutions,
and a loving welcome to the staff and students of MCMDAB. I express gratitude to all present for adding meaning to our efforts. Thank you and a very good day to everyone. Thank you, Dr. Sharma, for heralding the voyage in the desired direction. Don Walsh once said, "The purpose of life is to know yourself, create yourself, experience yourself as who you really are. There's no other reason to do anything else." On that note, we, the team Soul in Symphony, would request our Madam Principal, our distinguished guests, our illustrious speakers and co-conveners of the conference to kindly light the ceremonial lamp, the Deep Shikha, and seek the benedictions of the divine universe. I would request our distinguished guests, our illustrious speakers, our guests, our conveners of the conference, and senior members of the advisory to please join. Pray the divinity shower and call on the actualization and celebration on us. We request to please honor our spoken principal, a token of our gratitude to Brigadier Retired
request the members, conveners and the members of the advisory to please join. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, I would kindly honor Professor, Tulip University, Solar. We would request Madam Principal to please offer a token of our regard to Professor Sharma, celebrated author, translator, and theatre director. Thank you, sir. We would request Madam Principal to please grace our guest of honor, Commandant Kamal Sisodia, 13 BN Central Reserve Police Force, with a token of our gratitude. Ma'am. I would now request our Madam Principal, Dr. Nisha, the one who leads by example, the poet, the economist, the leader, the administrator, the author, academic, administrative, cultural committees, able leader, and a worthy guide who always encourages one and all to realize their true potential. Please address our audience. Thank you, Komal. Thank you, Dr. Vidula. Brigadier Dr. Rajiv Sethi, Dr. Sandhu Chetri, Professor Satish Verma, Commandant Kamal Sisodia ma'am, other distinguished guests, Dr. Vidula Sharma, Ms. Madhvi Bajaj, members of organizing team, staff members, and very dear students. I welcome you all on this international conference on the theme, The Soul in Symphony, Journey of Happiness through Self-Actualization and Self-Realization. Dr. Mridula just mentioned that we previously organized one similar conference in the year 2018, and this time we have taken the journey to happiness to a higher level, while we will be making an attempt to guide everyone to move in the direction of real happiness through self-realization and self-actualization. So I will talk a little about both these concepts. Self-actualization, जैसे कि मैंने इसको समझा है, ये आत्म साक्षात्कार है। इसका अर्थ है अपनी वास्तविक क्षमताओं को विकसित करना।
So self-actualization is the highest level of psychological development where we can expand our personal boundaries and limits, where personal potential can be fully realized after basic bodily and ego needs have been fulfilled. हम ये जानते हैं कि हम सभी अच्छे हैं और हम सबसे अच्छे सर्वोत्तम बनना चाहते हैं। उसके लिए हम प्रयास भी करते हैं। हम सभी समाज में रहते हैं और समाज में रहते हुए सामूहिक रूप से जब हम अपनी क्षमताओं को विकसित करते हैं तो एक दूसरे को उत्साहित करते हुए, मोटिवेट करते हुए हम अपना सबका विकास करते हैं और इसी प्रक्रिया में आनंद का अनुभव करते हैं। पीटरसन ने यह कहा है कि सभी व्यक्ति अच्छे ही पैदा होते हैं और बचपन से ही उनका विकास इस प्रकार होता है कि वो अपनी क्षमताओं को अच्छाई के लिए पूर्ण रूप से विकसित कर सकें। उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग आत्म साक्षात्कार में होते हैं उनके कारण समाज का बहुत सी सभ्यताओं का विकास होता है और दूसरी तरफ जहां ऐसे लोगों की कमी होती है वहां सभ्यताओं में और समाज में गिरावट आती है। But Freud says that not everyone is working for self-realization or self-actualization, and many people are hostile to each other, according to him. He says that civil society is perpetually menaced with disintegration through this primary hostility of men towards one another. And culture has to call up every possible reinforcement in order to erect barriers against the aggressive instincts of man. इसलिए हम सबके लिए ये जरूरी है कि अपनी सोच को सकारात्मक बनाकर रखें और अपनी क्षमताओं को विकसित करें। अब किस तरह से हम अपनी सोच को सकारात्मक रख सकते हैं और अपनी क्षमताओं को विकसित रख सकते हैं, इसके बारे में बहुत से दार्शनिक उन्होंने ये कहा है कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ मैं विशेष रूप से स्वामी विवेकानंद के कुछ कोट्स हैं उनको बोलना चाहूंगी, उनको कोट करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे खुद बहुत मोटिवेट करा है। He said, all the power is within you. You can do anything and everything. और उन्होंने कहा, arise, awake and stop not till the goal is reached. इसी तरह उन्होंने आइडिया के बारे में कहा, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ। ये बहुत बड़ी बातें हैं, चाहे मात्र एक सेंटेंस है लेकिन इसमें बहुत बड़ी एक सीक्रेट ऑफ सक्सेस छुपा हुआ है। क्योंकि मैं आपके साथ अब अपना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। मैंने भी अपनी क्षमताओं को विकसित करने का प्रयास किया जैसे कि हम सभी करते हैं। बचपन में एक छोटे से घर में बैठकर मैं सोचा करती थी कि मेरा एक सफेद घर होगा जिसके चारों तरफ एक बगीचा होगा और बार बार मेरे ख्यालों में वो एक विजुअलाइज होता था घर। मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे रहूंगी उस घर में, कैसे पहुंचूंगी, बट वो मुझे दिखाई देता था। और जब मैं यहाँ पर आई, जो घर मैंने देखा वो बिल्कुल वैसा ही घर था जो कि मैं अपने ख्यालों में देखा करती थी। बहुत मेहनत करी, हम सभी करते हैं आगे बढ़ने के लिए, ऊपर पहुंचने के लिए, और यहाँ आकर इतनी अच्छी टीम के साथ काम करके मेरी क्षमताएं और भी ज्यादा विकसित हुई। आप देखिए कि मैंने लाइफ में कभी कविता नहीं लिखी थी, यहाँ आकर मैंने कविता लिखना शुरू किया। मेरे 2 पोएट्री वॉल्यूम्स पब्लिश हुए। अब भी न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में मेरी पोएम्स छपती रहती हैं। और जो सबसे पहली कविता मैंने यहाँ आकर लिखी थी वो मैं स्टाफ के साथ तो शेयर करती रहती हूँ, आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। ये ऐसे है, बहुत अमीर बनने का सपना नहीं था, किसी महल का ख्वाब भी अपना नहीं था, एक खूबसूरत सफेद घर का ख्याल दिल में बसाया था, जिसे चारों तरफ बगीचे से सजाया था। मगर ये मालूम न था वो घर कहाँ है, मेरे ख्वाबों का वो शहर कहाँ है। उसे ढूंढते इस जीवन पथ पर हम चलते रहे, न जाने कितने दिन, साल और मौसम बदलते रहे। फिर ये देखा कि जीवन संघर्ष की कहानी है, कभी कभी कोई मुश्किल,
कोई परेशानी है। और एक दिन आखिर मुझे वो शहर मिल गया, वही बगीचे में बना खूबसूरत सफेद घर मिल गया। तब ये जाना कि ये घर तो बस एक मुकाम है, तब ये जाना कि ये घर तो बस एक मुकाम है, जिंदगी मुख्तसर और छूने को अभी आसमान है। ये सच है कि मशक्क़त के बिना मुकद्दर नहीं मिलता, और सपने देखे बिना कभी सपनों का घर नहीं मिलता। सपने देखे बिना कभी सपनों का घर नहीं मिलता। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में। इसी तरह सेल्फ रियलाइजेशन की जो धारणा है, भारत के संदर्भ में इसका अर्थ है अपने अस्तित्व को जानना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ पे जाऊँगा। हम सभी अपने अस्तित्व को खोज रहे हैं। श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि हमारे शरीर के अंदर आत्मा का निवास है, और आत्मा जन्म और मृत्यु से परे है। जैसे शरीर में आत्मा बचपन से युवावस्था और युवावस्था से वृद्धावस्था में प्रवेश करती है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में भी प्रवेश कर जाती है। और आत्मा की ये यात्रा लगातार चलती रहती है तब तक जब तक वह परमात्मा से मिलने के लिए तैयार नहीं हो जाती, और आत्मा का परमात्मा से मिलना परमात्मा में उसका विलीन हो जाना है। स्वामी परमहंस योगानंद जी ने कहा है, द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट इन द क्लाउड्स in some designated point of space. It is right behind the darkness that you perceive with closed eyes. God is consciousness. God is absolute existence. God is ever new joy. The joy is omnipresent. Feel your oneness with that joy. It resides within you, and it encompasses infinity. Endlessness, that is the kingdom of God. Conscious bliss, eternal and boundless. When your soul has expanded and feels its presence everywhere, then you are united with the Spirit. हम सभी उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के ही अंश हैं। हम उन्हें कहाँ ढूंढ रहे हैं? वो तो हमारे भीतर ही हैं। ईश्वर कहते हैं, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सृष्टि के कण कण में रहता हूँ। कहाँ ढूंढता है मुझे? ऐ इंसान, मैं तेरे ही मन में रहता हूँ। फूलों की खुशबू और कोयल के गीत में हूँ, बहती हुई नदियाँ और झरने के संगीत में हूँ। तुम मुझे ढूंढते हो धरती में और गगन में, कभी खोजते हो गली कूचे और चमन में। मुझको पाना है तो खुद ही को मिटाना होगा, अपना एक खूबसूरत किरदार बनाना होगा। जब भी अपने मन से लौ लगाओगे, जर्रे जर्रे में मुझे पाओगे। ढूंढे से नहीं मिलूंगा मैं दुनिया के मेले में, खुद और खुदा से मिलना हो तो मिलना कभी अकेले में। So during my own journey to self-actualization and to happiness, I discovered that the happiness, how I perceive it, just like a water bubble, and we can find true happiness only through self-actualization and self-realization. And happiness lies within ourselves. And this realization also found its expression in the following words: "O happiness, I looked for you everywhere, in spirituality and in material pleasures so rare. I searched for you in poetry, literature, music, and art, and in marvels of science and technology so dear to my heart. I explored you in luxuries, adventures, fragrances, and flavors, and often I didn't succeed in my endeavors. I believed you had some permanent abode, hence I searched for you in temples of God. And where did I find you? I found you in love, compassion, goodwill, and affection. I found you in my work when I strove for perfection. And most importantly, I found you within, and I realized you are nowhere if not therein."
And my quest for eternal bliss goes on till the union of self with God gives me true happiness. And I wish everyone succeeds in their similar quest. I once again welcome all the distinguished guests and express my gratitude to them for sparing their valuable time for us. And my most affectionate gratitude goes to our organizing team led by Dr. Mridula Sharma and Mrs. Madhvi Bajaj. Without their single-minded focus and dedication to this thing, this task, this event wouldn't have been a reality. They have beautifully woven the concept of happiness and included a variety of events such as lectures, panel discussions, sessions on meditation, food, dance, fitness, and much more. So my gratitude once again to everyone involved in this journey to happiness. Thank you very much. Thank you, Madam Principal, for the kind and encouraging words on self-actualization, and we hope our audience makes the most of the conference. Now, the moment we all have been eagerly waiting for. Oliver James once mentioned, "Do your thing on your own terms and get what you came here for." On that note, I would request Brigadier Dr. Rajiv Sethi, Advisor, ICFI Group, to present the presidential address on leadership lessons, a path to self-actualization. And before he does, let us witness the range of his endeavors and efforts that have helped him realize his own potential and infuse the spirit of encouragement in all others. नहीं किसी पे कोई वश नहीं क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे ये जाके आसमान में दहाड़ दो प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी तुम हार लो आन शान याद जान खाओ दान उसके हाथ में उतार दो प्रचंड शौर्य का चुनाव या कि हार का वो सोच लो शौर्य का चुनाव या कि हार का वो तुम ये सोच लो बाल भर जला रहे जल का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो काल तुम ये सोच लो On the 7th of July, 1999, a young group of soldiers led by a very young officer
was tasked to capture a height called 4875 during the Kargil War. The young officer, who was known by the code name Sher Shah, was leading this offensive. However, as you may know, that in Kargil Heights, all the assaults were taking place nearly in a vertical plane, with the enemy sitting on top and firing on top of you. For some reason, that is because of a CAJ evac, that is the casualty evacuation, the operation was daylighted. To assault during day to the enemy sitting on top of you was asking for sure shot death. But while they were debating this, one of the soldiers was shot by, they were all hiding behind a particular certain boulders, and this young boy, young Jawan, was shot and he fell down exposed to the enemy and was crying in pain. This young officer, knowing fully well this soldier back into safety, while doing that, he got a bullet, or rather a burst of bullets, and died there. Seeing this particular incident, his team of 26 men charged towards the enemy soldiers, and killed them all, and capturing that particular height called 4875, which means approximately 16,000 feet. Now, can anybody tell me who this officer was? Yeah, so it was Captain Vikram Batra, who was awarded the Paramveer Chakra because of his valiant deeds. But that's not the only case of a single officer leading the offensive. All along the front, the offensives were being led by young officers, knowing fully well that a large number of troops are going to die because of the situation that you are assaulting on a cliff face. And for your information, the official figures of the deaths during Kargil war from the Indian side are 584 soldiers killed and approximately 1,600 severely wounded. Why am I giving you all this today? I am informing you this, that what is it that you must understand that causes somebody to lead an offensive behind a leader, a young leader, to their sure shot death? What is it? Why is it not there in any other force that such a situation occurs where the soldiers are willing to follow the leader to their death? What is there in this leadership? The answer actually is very simple. The answer is what Vikram Batra did, that he was willing to die for the men he was commanding. So the basic lesson that you learn from the military ethos is that any top class leadership would result in the men even leading, when you can lead them to their death, because they know that you will also do the same for them. So, considering this, there was a study which was carried out as to what is the difference and what kind of leadership is practiced in the military. Leaderships are of all kinds. You have leaderships of mostly autocratic within the forces, but this running theme that goes behind it is that you have a transformational leadership, that the leader considers that unit, and a number of you may be from the armed forces families and would have served with your father, you would have been in number of places where you would have served in a battalion or a regiment, and you would realize
that the whole battalion or a regiment is a small ecosystem which actually is considered a family by the leader, in this case by the commanding officer. He has the second rung of leadership in the form of young officers who are taking care of the troops who are directly under them. What is it that allows people to have this kind of leadership when the men are willing to follow you to your death? The answer is actually the leadership of a transformational kind, wherein you make them feel that you belong to a particular family. And if the family does well, everyone does well. I want to bring this down to the fact that after I took voluntary retirement from the army, I have been part of an education system. And I have been part of the ICFAI universities, which have got 11 universities and 9 business schools, certain other schools. And I have been going to all these schools to carry out an analysis as to what kind of leadership is being practiced in them. What I would like to bring to your notice, since all of you are students and faculty here, is that what I found was that if the leader was in the organization not as a job but considered it to be his family, I found that he was able to infuse the sense of enthusiasm among the faculty, and thereby the faculty was therefore able to look after the students in a manner as if you belong to a family. And that, in nutshell, what exactly happens when you have a top-class leader at place. And why I'm talking to you today about the leadership aspect is that a leadership of this nature allows you a nurturing atmosphere where you can grow. What is the main aim of anybody is basically the need of self-actualization, as he says, is the best that you can be. As the principal madam has said, and as the other speakers have also informed you, that the basic aim in life of everybody is to be happy. You want to have a sense of self-actualization where you can be the best that you can. And in a good leadership environment, it provides you an opportunity to grow. I wish all of you that in your life you come across that kind of leadership and you in turn become such leaders who allow your subordinates to grow and reach their potentials. With that, I would also like to thank the principal ma'am, the organizers, especially Dr. Mridula, for having invited me and given me this opportunity to address you all. I would also like to thank you all for being a patient, captive audience and listening on with a rapt attention. So I wish you in the end all the very best, and I hope that you all achieve the potential where you need to be. Jai Hind. Thank you. Thank you, sir, for motivating one and all, especially our students. We hope to learn from your experiences and promise to deliver beyond the call of duty as a means of self-actualization. I would now request Dr. Samdhu Chetri ji, Senior Leader Director and Professor, Shulini University, Solon, to please deliver the keynote address on harmonizing happiness, integrating gross national happiness with self-actualization and self-realization.
had a collar mic, that would have been wonderful. We'll give you. But it's all right. We'll give you one so we have it. Okay. Good morning, everyone. May we begin by calling ourselves to ourselves. May I request all of you to sit comfortably. Okay, sit comfortably. Put your right hand on your chest. Give me a second, please. Can you put your right hand on your chest, okay, where your heart is? Your left hand on your navel, right in the center of your stomach. All right? Close your eyes and begin to breathe in deeply. Breathe in deeply. Hold it for 3 seconds. 1, 2, 3. And slowly breathe out. Feel the movement of your chest expanding, your stomach rising. Okay? Go with those flow. Keep your eyes closed. Your right hand on your chest, where the heart is. Heart is not always on the left. Your heart is somewhere in the center here. Okay? Again, breathe. Take a deep breath in. Flow with the breath. Meaning put your full focus on your breath and feel the movement of your body. How your chest is expanding, your stomach rising. Alright? Slowly breathe out and feel how the stomach is falling, your chest reducing. Continue 1 or 2 more times. All right, thank you. Those of you who did sincerely, I'm sure you have a calming feeling already. All right. Well, lot to tell you, but let me just begin by saying, like what the former speakers have mentioned, that the ultimate desire of all human beings is to be happy, right? We should never make it a goal. Dalai Lama said, happiness is not radiating. It comes with your actions. What does that translate? It means that what you think, how you act, how you speak, like, how do I control this? A lot of people coming. Is okay? So, even Mahatma Gandhi said, what you think, what you speak and what you do, if they are in synchronicity, you are happy. Alright? The Bhutan development paradigm says that to be happy is not the fleeting, feel-good moods like Madam Principal mentioned, that brings you happiness. It's actually the hedonic kind of happiness. You want the latest mobile phone, you feel you will be happy. The moment you get that, next moment you'll never be happy. Because you want more, and more, and more. There's no end to it. Madam mentioned beautifully in the self-actualization, if you have a dream, that dream translates into your self-affirmation. And I promise you, what you want to be, if you begin to self-affirm yourself, alright, whatever you want to be in the world, a smiley person with full of radiance in you, all you need to do is practice that. Visualize, feel it, and continue doing it for 45 minutes every day into 21 days you become. You'll be very skilled in that. I won't say you'll be an expert like what Maslow said. You want to be an expert in a particular field of your passion, all right? You'll have to work hard towards it for the self-actualization. Self-actualization, as Madam mentioned, is outside of us. You have fame, name, much wealth coming to you. That is
self-actualization. You can become somebody. But how many people, rich people, famous people that we remember? Very handful. And if you look into this principle where Bhutan says that if you serve others, like Guru Nanak mentioned, if you serve others, live in harmony with nature, and realize human potentials deep from within, then you tend to be happier. Now, in doing so, let me tell you, before I come to self-actualization, self-realization, I'll tell you a story. A king had 4 queens. Okay? He loved his 4th wife so dearly, and anything she asked him, he would provide. Latest jewelries, ornaments, beautiful clothes. He also loved his 3rd wife. And whenever she told him something, he would deeply listen and follow her. He also loved his 2nd wife. Whenever he felt a little out of the place, he would go to her and feel happier, get the latest information of his life. But he never took care of his 1st wife. It was time for him to die. And then he thought, well, I have my most loved wife, my 4th wife. I'm sure she'll come with me to my deathbed. And then he invites her to come. And the reply he gets from his wife is that the moment you die, I'll go away with somebody else. He's heartbroken. The most loved wife says so. Then he calls his 3rd wife. And the 3rd wife says, well, sorry, I can't go with you. Simple as that. Then he requests the 2nd wife, almost feeling that I'm sure she'll also say no. But the 2nd wife says, I will come as far as your cremation or your burial is. There's a voice from the 1st wife that comes running to him, saying, I will come with you. Now let's translate these 4 wives. The 4th wife is the clothes, the ornament, jewels, that he bought for himself. The 2nd wife was his advisor, 3rd wife was his advisor. So he would listen to his, ruling. 2nd wife was his friends. They will come out, of course, as far as the grave or cremation is, right? And the 1st wife was his soul. This is something that we never take care of in our lives. Never take care of our souls. And if you want the soul to be in symphony towards the goal that you prepare as a desire in your mind, not a goal. Never make happiness a goal, because you can never reach. It is very essential to have an external environment for you to sustain so that you can, at a point of time, get into your own inner self and try and bring your transformation from within. Sufferings that we carry with us are few. One is that we divide self with self. There are, if you Google and see, there are huge amount, 13% of all the global people are suffering from depression, anxiety, and is becoming the greatest trend towards death seeking. In the youth, it's even larger. Maybe every 1 of 10 Indian youth are suffering. Why? Because they have separated themselves from themselves. They follow the comparison. They want to compete. They don't think competing themselves. You know, what I did yesterday, can I do better today? They don't think this way. But they look into somebody and try to compare. How do you know their life is better than yours? You see, comparison is one of the worst things to bring you unhappiness. Never compare yourself with anyone. We do compare because of the voice of judgment, voice of fear, voice of cynicism. We begin to compare ourselves with others. Avoid this comparison. Try to forget yesterday. That's dead and gone. If you want to learn something out from yesterday's mistake, that's the first step you take towards tomorrow. How do we know that tomorrow will come? We don't know, but we take everything for granted. We're never grateful for anything. If we didn't have dress, we would all be naked here. If we did not have a speaker like this, a mic like this, I would not be reaching out to you.
So everything we take for granted. We even don't thank parts of our body. The hands we hold, others, we do namaskar, we walk around. We're never grateful to any parts of our body. We're completely separated from ourselves with our own self. Right? The second separation is self with others. We start to divide others in caste, creed, in different sections, of society. And we also bring suffering in that parameters. The third suffering is environment. We divide ourselves with the environment. We think environment, the nature is there to serve others. We do not think that nature is a part of us. Right? Unless you become aligned with nature, okay, with your own self and with others, you can never get into the journey of self-realization. First important thing is you need to know yourself. Okay? Now let me just come to this. I'm just speaking in the room here, in the principal's room. What is Bhagavan to you? Quickly conclude with that. There's very little time. What does Bhagavan stand for you? So there. What does it mean? Shout louder. A positive power. All right. Any other thoughts? See, I'll tell you this. To know ourselves, this is the first step. What Master Principal said, who am I? Where do I come from? What is the purpose of my life? Before you know yourself, you cannot do anything great outside of you. So you must know yourself. Let me tell you this. Bhava stands for Bhumi. 12% of our body form, which on average is 37.2 trillion cells in our body. Average. If you talk about American average is 50 trillion cells because they are dying, obese, dying. But on an average, in the global average is 37.2 trillion cells. Can you imagine how much is 37.2 trillion cells? Can you imagine? It's huge, right? So according to the basic science, 12% of our body form is from the food that we eat, from who? Bha, Bhumi. The next is Gagan, Ga, Bhaga, Gagan. The 5 senses associated with us is from Gagan. But nose is not a sense, it is just cell, right? It's only a medium. Air is a medium, is cell, eyes is cell, your tongue is cell, your skin is cell, where you feel. So there is no proportion of Ga in our body except is the senses. Gagan has A with it, we don't write. Agni. We have 37.2 trillion cells. Let me see who is most brilliant here. Every cell constitutes equivalent to 1.4 volt of energy. Multiply that with 37.2 trillion cells, how much do you get? One is calculator. We get about 52,000.8 plus volt of energy in each of us. How do you spend this energy? Comparing yourself, trying to be, angry, jittery, not focused, getting fearing all the time, getting depressed. This is how we spend so huge amount of energy. If you can use this energy for yourself, you can imagine what you can do. Like I think it was Madam Principal who mentioned the power of energy. That you can become anything. You can do anything with this much of energy. Try and add all the electrical fields of energy in this world that are existing. It will not be even that much that we, one individual, have. So you can become what you want to become completely. How do you become? Is how to self-affirm yourself. Alright? I request all of you today, go back home, try to put self-affirmation and carry with you in your mind in places you reside or you walk around, and I promise you, you will become within another 2 months or so. Now I'm not talking out of just my brains. A lot of things are researched, okay? It's out of the scientific realms. Now Bhaga, Vayu. You see Vayu. Vayu is wind, right? We need to breathe. Believe this, that even one cell required the tip of a pin. How much is the tip of a pin?
equivalent of oxygen for one cell, we're talking about such 37.2 trillion kits. It would fill this area very easily. So 8% of our body form is supposed to be energy according to Vedic science, and other 8% is Vayu, wind in us. The final word is Na, Nir, which stands for water. Mainstream science says 60 to 80% of our body form is water, and Vedic science has averaged it to 72%. Now let's add 12 plus 8 is 20, 20 plus 8, 28 plus 72, 100. 100% you are 5 elements Bhagwan. So who is Bhagwan? We all. We all are Bhagwan. With your hands raised, you know. We all are Bhagwan. We will believe in Bhagwan. We will live in Bhagwan. And we will take care of Bhagwan. Who are you taking care of? Yourself, right? Alright, I don't want to extend longer these limitations of time, so thank you so much. But I promise you, one thing, do not have dualistic perspective in your mind. Do you know what it means? I'll give you with a very quick example. For example, in sector 36 in your ground, there's a guy, old guy, haggard with a lot of blood flowing, with nostrils flowing, old chap, very dirty looking with shaggy hair, and by his side is a dirty, wounded dog. You're just passing by. How would you react to that? I'm sure most of us will walk around saying, chi, 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 what is this? Imagine this way, that the same guy has been painted and is in a gallery of paints. How would you say that? Oh God, look at this, so real and so beautiful. What is happening in us? When we see the reality, we avoid that, and the thinking comes, why can't we all be painters? If we can be painters, you will be in non-dualistic perspective and will become great human beings. Thank you so much. Thank you so much, sir, for helping us understand the meaning of happiness, breathe it into our existence, and inhale life. We take this opportunity to also welcome Ms. Poonam Bhatt, Senior Journalist and Corporate Consultant. We also welcome Ms. Seema Sharma, Editor-in-Chief for Life magazine. I would now kindly request our guest of honor, Professor Satish Verma, a writer, a translator, a theatre director, and an inspiration to many young minds, to kindly address our audience. बहुत बहुत शुक्रिया कोमल जी, काबिल एहतराम निशा मैम, राजीव जी, छेत्री जी, कमल जी, जतेंद्र जी, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਿਓ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਣੀਆਂ। ਹਾਰਡਕੋਰ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਹੈ। औरत दा शरीर लैके जमना इस तो वड्डी कोई प्राप्ति नहीं दुनिया च। मैं पुट्ठा लटक जा लेकिन मैं किसी औरत का मुकाबला नहीं कर सकता, सिर्फ इसलिए कि दो क्रिएचर कुदरत ने बनाए, एक औरत एक मर्द। दुनिया का कोई ऐसा शख्स नहीं है जिहड़ा अपनी मां की कुख चों पैदा ना होया हो। इसलिए मैं कहना है कि औरत रब है। वो कहन जी औरत रब है, किवें हो सकता? मैं कहा उदाहरण है मेरे को, जिन्ने भी रब इस धरती ते आए, किसी भी धर्म दे आए, किसी भी जामे च आए,
एक औरत की कुख चो आए, मां नूं 9 महीने तंग करके आए। औरत रब तो भी वड्डा रब है, क्योंकि वो रब नूं भी जमदी है। अज जिहड़ा सबजैक्ट है, बड़ी संखेप गल करांगा। खुशी। छेत्री साहब ने कहा सी सारे तुसी कहो असी भगवान है। ਇਹਦਾ मतलब फिर इंसान ही भगवान है, अंदर ही मंदिर है, तुहाडे लभण दी लोड़ है। साडे पंजाबी दे फर्स्ट पोएट, पायनियर पोएट बाबा फरीद, शेख बाबा फरीद, वो 12वीं सदी च पैदा होए। एक पंजाबी मां दी कुखों पैदा होए। उन्हां दे पिता बाहरों आए सी, इत्थे एक पंजाबन औरत नाल विआह कीता। पंजाबी मां चो पैदा होए, मां बोली पंजाबी च पहली कविता लिखी। फर्स्ट एवर पोएट ऑफ पंजाबी शेख फरीद, 12वीं सदी च। और इंटरेस्टिंग गल है कि अंग्रेजी का पहला कवि चौसर 14वीं सदी च पैदा होया। 200 साल साडी पंजाब की शायरी अंग्रेजी नालों पुरानी है। दूसरा नुकता, 1801 तो लैके 1839 तक पंजाब च महाराजा रणजीत सिंह ने राज किया। 39 च उहदी डैथ हुई। फिर वो वारस आपस लड़े झगड़े, इसके बावजूद 10 साल फिर भी राज होया। 1849 च अंग्रेज आए, 200 साल वो हिंदुस्तान ते राज किया। 98 साल पंजाब च, 102 साल असीं रोकी रखा। लेकिन सब तो इंटरेस्टिंग पॉइंट कि रणजीत सिंह पढ़ नहीं सी, सिक्ख्या नहीं सी, स्कूल नहीं सीखा, लेकिन पढ़िया लिखिया सी। उस वेले पंजाब दे विच लिटरेसी 100% सी, इंग्लैंड 50% सी। सो असीं उस धरती ते जम्मे आ जिथे दुनिया की पहली किताब रची गई ऋग्वेद, दुनिया की पहली जबान संस्कृत इस धरती तो पैदा हुई। उस धरती ते जमना, उस धरती ते पलना, उस धरती तुरे फिरना, इस तो वड्डी तो खुशी है ही नहीं कोई। इसलिए दुनिया की सब तो खुश कौम असी लोग जिहड़े इत्थे बैठे हैं। हाँ, असीं खुश रहना सिखा सकते हैं, क्यों चाहूगा। तो उस तो बाद बाबा नानक जिहड़े मेरे मैंटर ने, सब तो वड्डे स्कॉलर, सब तो वड्डे पोएट, सब तो अच्छे पति, सब तो अच्छे पिता, सब तो अच्छे पुत्र, सब तो अच्छे गुरु, एवरीथिंग। फिर गुरु साहब ने क्या, मन जीता जग जीत। असी जग जितन तुर पैने, लेकिन इनू जितदे नहीं जिहदे करके जग जित जा सकता। ते जे मन जित, जग जितन की लोड़ ही नहीं, जग थोड़े अंदर ही आ जाता। खुशी कितों बाहरों लैन नहीं जानी पैंदी, खुशी अंदर ही हुंदी है। पर अंदर उवें ही हुंदी है कि तुहानूं खुद नहीं पता। पुराने जमाने होटल्स वगैरह नहीं सी हुंदे, धर्मशाला हुंदी सी जिथे लोग रात कटते सी। एक कोई अमीर बंदा, बिजनेसमैन सफर कर रहा सी, पैदल सफर हुंदा सी। एक चोर ने उन्होंने काबू कर लिया, उन्हें लग्या भी इहदे कोल पैसा, सेठ बंदा। हुण रात इक्को ही कमरे चो ठहरे ते सारी रात चोर लभदा रहा कमरे चो कि पैसे कित्थे ने। ते जिहड़ा शाहूकार सी, बैठा घराड़े मार रहा सी। चोर बड़ा हैरान भी पैसे इहदे ने, मैं चोरी करने आ ते कमरे किते लभ नहीं रहे। कपड़े देख ले, सब कुछ देख ले, फ्लॉप। जब सवेरे उठिया बंदा, चोर ने हाथ जोड़ते, कहता उस्ताद जी मैं दसो भी थोड़े पैसे तुसीं कित्थे रखे सी। वो कहना तेरे सराहने रखते सी, मैनूं पता तू अपना सराहना नहीं देखना। असीं अपने आप नूं देखदे ही नहीं। ते इहदा सौखा तरीका अपने आप नूं देखण दा, कुदरत ने ढांचा बनाया जिहड़ा तुहाडे सामने खड़ा। कोई 5 फुट 6 इंच, कोई 5 फुट, कोई 4 फुट। हुण तेनजिंग 4 फुट नाल एवरेस्ट ते चढ़ गया। पर असीं कहने कि पहला बंदा हलेरी है जिहड़ा एवरेस्ट ते चढ़िया। मैं पिछले साल हर रोज एक नाटक लिखा, 365 नाटक, एक पेज का रोज नाटक लिखता सी। मैं नाटककार है, WhatsApp ते भेजदा सी। और हुण किताब छप चुकी है, नाम है 365 दिन 365 नाटक। वो एक नाटक है कि लैक्चर करना आया बंदा, साडे वांगू मोटिवेशनल लैक्चर। वो कहंदे भी सब तो पहला एवरेस्ट ते कौन चढ़िया? कहंदे हलेरी। कहंदे कल्ला ही चढ़ गया छाल मार के? ना जी, कहंदे कल्ला थोड़ी चढ़िया। होर किवें चढ़िया? कहंदी तेनजिंग सी शेरपा जिहड़ा रस्ता दसदा सी। अच्छा, कहंदे 4 फुट वाला तेनजिंग? कहंदा हां जी। कहंदा एवरेस्ट नहीं सी चढ़िया? कहंदा नाल सी। कहना उन्हें असिस्टेंट प्रोफैसर जो मर्जी कर लो, थोड़ा कहणगे चढ़िया, तेनजिंग चढ़िया। हलेरी एक बार चढ़े, तेनजिंग ने किन्ने हलेरियां माउंट एवरेस्ट चढ़ाया। सो जे साडे कोल ताकत है,
ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਕਤ। याद रखो कि साढ़े को लै दे के जो कोई चीज़ है तो दे है, जिसकी कोई गारंटी नहीं, वारंटी है। यदि एक्सपायरी डेट 100 साल लिखी हुई है, पर कई हिम्मती 100 तो उपे भी चल जाते हैं, तो कई बेचारे पहला खत्म कर लेंगे। तनख्वाह है भावें 5 तरीक को खत्म कर लो, भावें पूरा महीना भी उत लो। सो तुहाडे कोल लै दे के शरीर है, जिहो जिहा मिल गया उहो जिहा पीस चेंज नहीं होना, गारंटी कोई नहीं है। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਅੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਓ, what does it mean? ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਕੱਦ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਕੱਦ ਵੀ ਲੋਕ ਵੇਖਣਗੇ, ਬਸ਼ਰਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 4 ਫੁੱਟ 8 ਇੰਚ ਕੱਦ ਸੀ। 65 ਤੋਂ 67 ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੱਗੀ, ਹੁਣ ਰਜੀਵ ਸਰ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ समझौता कराया रशिया ने, तो ताशकंद समझौता होना सी। हुण एक पासे लाल बहादुर शास्त्री छोटा जिहा कद, सादे कपड़े पाए हुए, और गर्म कोट भी नहीं उन्हां कोल सी, एक खादी दा कोट पाया होया सी। ते उत्थों दे प्राइम मिनिस्टर ने उन्हां नूं ओवरकोट दिता, कहंदा जी इत्थे ठंड है, तुसीं इह पा लो। ਉਹ जब फंक्शन ते आए ओवरकोट है नहीं सी, ਉਹ कहंदा जी कित्थे, कहना जी मेरा पीए नहीं सी लैके आया गर्म कपड़ा, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਰਸੀ भी है नहीं सी, मैं अपना ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੀ ਅਯੂਬ ਖਾਨ, 6.25 ਫੁੱਟ ਕੱਦ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ लाल बहादुर शास्त्री जी नाल डायलॉग करना शुरू किया, कहता देखिए पाकिस्तान के मुकाबले हिंदुस्तान कितना छोटा है। शास्त्री जी को इथों कद सी 1350 ग्राम के पुरजे वाला जोड़ा असीं लई फिरदे हां सारे। उन्होंने जवाब दिता, इसीलिए जब भी पाकिस्तान को हिंदुस्तान से बात करनी होती है तो झुककर बात करनी पड़ती है। तो जो रंग रूप शक्ल सूरत मिल गई वो जियो, ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪਤਾ ਪੀਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਬਦਲ ਵੀ ਗਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਧੋਲਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਾਂਗ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਾਂਗ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। जिंदगी घर बनाओ। इसलिए खुश किवें रहिए, खुश किवें होइए। खुश होया नहीं जाता, खुश रहा नहीं जाता, खुशी थोड़े अंदरों आउंदी है। रब हसदे बच्चे नूं देख के खुश हो लैंदा। 3 समकाली कवि होए ने वड्डे, उर्दू दे अलामा इकबाल, बंगाल दे विच रविंद्रनाथ टैगोर ते पंजाबी प्रोफैसर पूरन सिंह। ये 1900 तो लैके 1947 तक का जरखेज एरिया ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਂਡ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪਰਸਨ, ਜੋ ਛੇਤਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਗੋਡ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪਰਸਨ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਆਰ ਗੋਡ। ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਠੱਪਾ ਲਾਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਇਹਨੇ ਇਸਲਾਮ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ जिसको हो शक वो करे और खुदाओं की तलाश, जिसको हो शक वो करे और खुदाओं की तलाश, हम तो इंसान को इस दुनिया का खुदा कहते हैं। जो दिखता है वो सच है। दिखता 800 करोड़ बंदे, 193 देश, 7000 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ, 2000 ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ, 22 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ, 23 ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਚਿੜੀ ਜਨੌਰ, ਚੁਪਾਏ, ਪੰਛੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੀਏਚਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੋਟਨੀ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਚਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਆਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬੜੀ ਹਾਰਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਕੁਦਰਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੁਦਰਤ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਤੀਆਂ, ਥਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣਾ। ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਸਾਇੰਸ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਸਭ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਨ ਤੇ ਬਾਲ ਮਾਰੋ ਡਬਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਬਲ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਡਬਲ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਪੋਚ-ਪਾਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੂੰਹ ਆਠਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਿਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਂ ਨੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਤਾ, ਆਪਣੇ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਮਿਆ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਅਸੀਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਮੇ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ, ਸਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਲਦਾ, ਉਹਦੇ 5 ਬੱਚੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਗਰੈਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜੰਮਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 9 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਉਸਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਸੀ? ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ, ਫਲਾਣੇ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਛੂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੀ ਦੱਸਣਾ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਢਾਡੀ ਬਣਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਠੱਪਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। 51 ਤੇ 61 ਦੀਆਂ 2 ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਤਰੋ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਹ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਜਿੰਨ ਦੇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੁੱਲਣ ਦੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਕਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨਾ ਚੰਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, 3 ਮਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਜਿਹਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ MCM ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜੀਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ, 3 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਸੀਂ ਹੱਦਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨਾਟਕ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਦਾ, ਅਫਸਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਦ ਤੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਖਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀ ਦਿਖਾਣਾ, ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ? ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰੀ, ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਗੱਡਤੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼, ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਉਣ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁਪਾਏ ਸੀ, ਚੁਪਾਏ ਤੋਂ ਦਬਾਏ ਹੋ ਗਏ, ਦਬਾਏ ਹੋਏ ਆ 2 ਲੱਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਜੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤ ਲਿਆ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਕਰੋ, ਸਿਰ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੂਈ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ। ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਚਿੜੀ ਚਿੜੀ ਹੈ, ਹਰ ਤੋਤਾ ਤੋਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ। ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 3 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਰਦੂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਰਬੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫਾਰਸੀ, ਰਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ 6 ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ 6 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨਾਲ 193 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੰਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਬੋਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰ ਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਕੱਦ ਕਾਠ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਾਊ ਸੀ, ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਬਾਨ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ, ਚਬਰ 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 ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਅਕਸਰ ਮਿਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿਸ ਲਈ ਖਿਚਾਉਣੀ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਐਜ਼ ਰਾਈਟਰ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਚ ਖਿਚਾਉਣੀ ਆ? ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਠ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 3 ਦੱਦਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ, ਇਹ 1350 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਪੁਰਜਾ, ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਵਹਿਮ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਬਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ, ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਏ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 10% ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਹਦਾ 12% ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਵਰਗਾ ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਲਤੀਫਾ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ 12.5 ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਪਤਾ 15% ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, 1 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਬਚਪਨ ਬੜਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਨਾ ਮਸਾਂ ਕਿਤੇ ਆਮਾ ਖਰਚਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੰਗ ਲੈਣਾ, ਮੋੜਨਾ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਆਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੋੜਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜੀ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਵਾਨੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 3 ਦੱਦਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, 1350 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਪੁਰਜਾ। ਲਾਸਟ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਦਿਲ ਆ ਤੱਕ 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 ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇ ਆ। 1 ਸਕਿੰਟ ਲੱਗਦਾ, ਫੁੱਸ, ਚੱਕੋ ਵੀ ਚੱਕੋ 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 ਚੱਕੋ, ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਓ ਬਦਬੂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਸੁੱਟੇ ਜੀ? ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਏ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਸੀ। ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਰੁੱਸੀਆਂ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਲੀਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਵੇ ਹੋਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲ ਮਿਲ ਨਾ ਸਕਾਂ, ਚਾਹ ਨਾ ਪਿਆ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਐਡੇ ਭੈੜੇ ਕੱਪੜੇ, ਧਾਗੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੰਦਾ ਸਜਦਾ ਸੰਵਰਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਓ। ਹਾਂ, ਰੋਂਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੋਂਦੇ ਤਾਂ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਦੁੱਖ 'ਚ ਰੋਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੱਸੋ, ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਸੇਗੀ। ਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਰੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਖੂੰਜਾ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ 3 ਦੱਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਓ। ਨੰਬਰ 1, ਸੱਚ ਦੇ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਇਹ ਦੇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਦਿਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਕਵੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ ਦਿਲ, ਦੇਗੀ ਦਿਲ, ਫਲਾਣਾ ਦਿਲ, ਢਿਮਕਾ ਦਿਲ। ਇਹ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਿ ਪੰਪਿੰਗ ਸੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਪਿੰਗ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਜਦ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ 1350 ਗ੍ਰਾਮ ਪੁਰਜੇ 'ਚ। ਸੱਜਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਖੱਬਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅੰਕਲ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਡੀਲ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਏਦਾਂ, ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੇ ਆ ਏਦਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਚੀਰ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪੰਪਿੰਗ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਂਗੂ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਲੈਟ ਹਿਮ ਵਰਕ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? 2 ਸਾਥੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਿੰਜਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲਾਈਦਾ, ਗੱਪੜ 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 ਗੱਪੜ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੂ? ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦਿਲ ਨੇ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਖੁਸ਼ੀ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਹਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ ਟੱਟੂ ਬਣਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਟਿਮਕਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਉਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। Thank you so much for these insightful deliberations. We feel honored to hear such philosophical discussions on inner peace and happiness, and we hope our students have learned
their lessons of humility and grace. I now request our guest of honor, Commandant Kamal Sisodia ji, 13 BN Central Reserve Police Force, to kindly address our young women present here. जय हिंद। इतनी सारी लड़कियां, इतनी सारी नारी शक्ति और अपने देश की जय बोल रहे हैं आप लोग। मजा नहीं आया। ना केवल आपका कॉलेज, पूरा चंडीगढ़, पूरे पंजाब में आपकी आवाज आनी चाहिए। दुनिया को पता चलना चाहिए कि जब लड़कियां अपने देश की जय बोलती है तो क्या होता है। So let's do it together. जय हिंद। Get up from the seats, come on. बहुत आगे हो गया बात किए हुए। Get up, get up. Raise your hands and then do it together. Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! A big round of applause for all of you. आपके जोश और राष्ट्र प्रेम को देखकर मुझे एक पंक्ति स्मरण आती है। कभी मीरा, कभी खुसरो, कभी रसखान हो जाऊं, कभी राधा कन्हैया का मैं गोकुल धाम हो जाऊं, जो वंदे मातरम की धुन कहीं बजते हुए सुन लो तो तिरंगे की तरह इठला के हिंदुस्तान हो जाऊं, हिंदुस्तान। तालियां भी पूरे जोर से बजानी है, जोर से बजानी है, तभी मजा आता है। So do it again. आज का हमारा टॉपिक है हैप्पीनेस, खुशी। क्या आप लोग खुश हैं? पक्की बात? क्या आप लोग हमेशा खुश हैं? आंसर दीजिए, कम ऑन आंसर। हमेशा खुश हैं? There is always up and down in life. We've all studied the curve of life, the sine theta, the cos theta, how the life goes up and down. So the science students must be knowing. And even in mathematics we have been drawing those curves. लेकिन क्या लाइफ में ऐसे जीने का कोई मजा है जिसमें कभी हम डिप्रेस होते हैं, कभी लो फील करते हैं, कभी हाई फील करते हैं? अगर लाइफ में कुछ ऐसा कमाल हो जाए, कुछ ऐसा कमाल हो जाए कि हम हमेशा खुश रह सकें, so I think that serves the real purpose of life. So that is real happiness.
दैट इज ट्रू हैप्पीनेस। और ये बात मैं इसलिए कह सकती हूँ कि 100% तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक मैंने उस चीज को अचीव किया है। और यहाँ तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, और आप लोगों से मैं इसलिए रिलेट कर सकती हूँ कि कल मैं वहां बैठी थी। आई स्टडीड इन अ वुमेन कॉलेज, और उस दिन जो मन में सोचा था कि वन डे आई बी वेयरिंग पुलिस यूनिफॉर्म, सो टुडे आई एम। When you talk of self-actualization and self-realization, तो मुझे एक बहुत खूबसूरत सी लाइन इसलिए याद आती है, हम सब फिल्में देखते हैं, शाहरुख खान की फिल्म देखी आपने, ओम शांति ओम, उसका बहुत फेमस सा डायलॉग क्या है? अगर पूरी शिद्दत से किसी चीज को चाहो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है, और कुछ ऐसा ही हम सबके साथ होता है, लेकिन वो शिद्दत होनी चाहिए। अगर मैं अपने जीवन की बात कहूं तो लाइफ में शायद ही ऐसी कोई चीज है जो मैंने सोची नहीं और वो हुई नहीं। और आज इस मंच पे एक और ऐलान करती हूं, जस्ट शो मी द स्लाइड्स व्हेन आई वाज बेडरूम। आपको मैं वो स्लाइड दिखाती हूं जिसे देख के आपको रियलाइज होगा कि आज मैं आपके सामने खड़ी हूं, बिल्कुल आपको देख के लग रहा होगा शी इज एब्सोल्युटली नॉर्मल जस्ट लाइक वन ऑफ अस, बट देयर वाज अ टाइम जब मैंने महीनों बेड में और व्हील चेयर में बिताया। थोड़ा सा मतलब लाइटिंग बना दीजिए। इफ यू लुक एट दीज पिक्चर्स you will realize कि this was my condition, that was my bad knee, and this was the wheelchair on which I spent months and months together. Next, this was the thing, and ये मेरी MRI reports, anyone can come and check, it was a complete tear, and everyone, like wherever I went, all the doctors had advised me to go for a surgery, लेकिन आप जानते हैं मैंने अपनी सर्जरी किससे करवाई? किसी इंसान से तो नहीं करवाई मैंने। एनी केसेस किसी इंसान से नहीं कराई। या योर प्रिंसिपल मैम के लिए जोड़ा पालना, तो वेरी वेरी इंटेलिजेंट। आप लोग ताली बजा रहे हैं लेकिन यूसी करते हो, कमाल। प्रिंसिपल की लगा यार। मैंने अपनी सर्जरी भगवान से कराई। आपको खुश रहने का तरीका बता रहे हैं। लाइफ में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है अगर आप भगवान से जुड़ जाते हैं। कोई तो शक्ति है जो इस दुनिया को चला रही है। हम और तुम क्या हैं? वी आर नथिंग, वी आर जस्ट mere bubbles in this ocean of life. The moment you connect with that superpower, that Almighty, life changes like this. लाइफ को बदलने के लिए टाइम नहीं लगता, सेकंड लगता। और you won't even believe कि just through the power of meditation, continuous meditation, healing meditation, and there have been proven examples where people have even healed their cancers and tumors and brain tumors. So I have worked in association with those people. I really worked with them, and then this was the miracle which happened with me. And today, from this stage, I am announcing one thing to you. But the day I was lying on the bed in the hospital with that fracture and that plaster on my leg, I said and promised one thing to myself. One day, I shall be fittest, happiest and richest Asian woman. So one day, it will definitely happen, and I'm sure that many of you can be a part of this, and I'll be honored for that. So this is the power of thinking. केवल एक छोटी सी बात है, लेकिन ऐसी पता नहीं कितनी सारी घटनाएं, जैसे कि प्रिंसिपल मैम ने बताया, because I can understand that कि जैसा घर उन्होंने चाहा, वैसा घर उन्हें मिला। और तुम लड़कियां हो, जैसा वर तुम चाहोगी, जैसा लड़का चाहोगी जीवन में, you get that. लेकिन the thing is कि केवल कहने से नहीं होता, we talk of affirmations. It has to come from inside. And अगर आपके पास खाली मोबाइल है, लेकिन चार्जर नहीं है, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं है, बिजली के पावर से तो नहीं हो। You have to connect with the universe. There are so many powers in the universe which are magically working. So मेरा आपको यही मूल मंत्र है लाइफ का, क्योंकि लाइफ में इतना कुछ देखा, इतना कुछ फेस किया है। Then I realized कि the happiness is a state of mind. Age is just a number.
People in 90s and 100s are doing skydiving. अब हमें करना कैसे? So let us quickly understand this and understand the process quickly. आप लोग अपना हाथ ऐसे करें and very fast. Now take your right hand and just hold your wrist. अपनी दाहिने हाथ से अपने बाएं हाथ की कलाई को पकड़ें. जितनी शक्ति से पकड़ सकते हैं, जितनी ताकत से पकड़ सकते हैं, पूरी ताकत लगा दीजिए. लगाई? कितनी देर तक होल्ड करके रख सकते हो? जो सबसे शक्तिशाली महिला है लड़की, कितनी देर तक ऐसा रख सकते हो? क्विकली आंसर द क्वेश्चंस. यस, दिस साइड. टीम ए एंड टीम बी. टीम ए कितनी देर तक आप रख पाएंगे हाथों से? हाँ जी, 1 घंटा. जब तक नींद आए, और नींद आने के बाद छोड़ दोगी. टीम बी क्विकली आंसर. 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना. इज इट पॉसिबल? यस और नो? कैन यू होल्ड इट लाइक दिस फॉर अ मंथ? यू कांट. नाउ आई वांट यू टू होल्ड योर नेक. आपको अपनी अपनी गर्दन पकड़नी है, लेकिन कैसे पकड़ोगे आप? अपनी गर्दन पकड़नी है, आप ऐसे ही हो, लेफ्ट हैंड पकड़ा हुआ है, लेकिन आपको गर्दन पकड़नी है राइट हैंड से. क्या करोगे? हाउ विल यू होल्ड योर नेक? पहले आपको अपने लेफ्ट हैंड को छोड़ना पड़ेगा, और फिर गर्दन को आंसर फिर गर्दन को पकड़ना पड़ेगा, चाहे गर्दन अपनी हो चाहे गर्दन दुश्मन की हो. सो बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैं कहना क्या चाहती हूं. बहुत आसान सी बात है. अगर जीवन में आपको उड़ना है, ऊपर उठना है, तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा. अगर छोड़ोगे नहीं तो उड़ोगे नहीं, लाइफ में ग्रो नहीं करोगे, खुश नहीं रह पाओगे. हम लोग इतना कुछ पकड़ के बैठ जाते हैं. आप सब बैठे होंगे, आज प्रिंसिपल मैम ने डांट दिया, हमारी टीचर ने ये कह दिया, आज हार्ट ब्रेक हो गया, उस बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया, मम्मी ने ये बोल दिया, उसने मेरा दिल तोड़ दिया. तो व्हाट वी हैव बीन डूइंग ऑल दिस व्हाइल? हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर डूइंग दिस, वो. But whenever we are pointing towards others, the 3 fingers are pointing towards us. जिस दिन ये फिंगर हम बाहर को पॉइंट करना बंद कर देंगे, we will stop holding others responsible for what is happening to us. Very good. बहुत छोटी सी बात है. आप लोगों ने देखे होंगे बहुत से जीव जंतु, तो सबसे शक्तिशाली, सबसे विशालकाय एक एनिमल है, उसका नाम बताएं, जोर से बताएं. आपके लिए भी तालियां बजाना चाहिए, मजा आता है. एलिफेंट. कभी बचपन में आपने देखा होगा जब एलिफेंट छोटा होता है, उसको अगर जो महावत होता है वो छोटे से एलिफेंट को जंजीर उसके पांव में बांध देता है और उसको बंधे रहने देता है. वही एलिफेंट छोटे से बड़ा हो जाता है और पूरे मतलब आप कह सकते हैं कि ब्रह्मांड का इतना बड़ा शक्तिशाली जानवर जो कुछ भी कर गुजरने की क्षमता रखता है, लेकिन वो उस जंजीर के सहारे बंधा रहता है. क्यों? क्लैपिंग फॉर आल्सो. क्योंकि उसको अपनी शक्ति का एहसास नहीं है. ऐसा कौन सा पंछी है जो बहुत बड़े जिसके पर होते हैं, जो बहुत ही शक्तिशाली होता है, जो आसमान में सबसे ऊंची उड़ान मारता है? कौन? क्या बात है, यू ऑल आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट. बाद से हम रेकमेंड करेंगे, मैम इन सबको कमेंटेशन दिया जाना चाहिए, यू बट वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है. बाज एक ऐसा पक्षी है जो आसमान में बहुत ऊंची उड़ान भरने की क्षमता रखता है. वो चाहे तो पूरा आसमान नाप सकता है. एक बहुत खूबसूरत सा गाना भी है, मैं परिंदा क्यों बनूं मुझे आसमान बनना है, मैं पन्ना क्यों बनूं मुझे दास्तान बनना है. लेकिन अगर उसी बाज के बच्चे को जब वो पैदा होता है, उसे मुर्गियों और मुर्गों के साथ हम छोड़ दें तो वो वैसे ही बड़े होगा, और जो बड़ा होगा तो उनके साथ दाना चुगता रहेगा, वो कभी आसमान में उड़ ही नहीं पाएगा. तो जीवन में अगर आपको बहुत ऊंचा उड़ना है, आपको खुश रहना है हमेशा, क्योंकि खुश वो रह सकता है जो उड़ेगा, जो बड़का होगा, शरीर से नहीं मन से. तो वो करने के लिए आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा. अगर आपको लगता है कि लाइफ में कोई चीज आपको दुख देती है, उस चीज को छोड़ दो. कोई ऐसी नेगेटिव थिंकिंग है, उस थिंकिंग को बदल दो. अगर आप अपनी थिंकिंग को नहीं बदलोगे तो आप 2024 में 1940 वाली सोच लेकर जीवित नहीं रह पाओगे. हमें बचपन से लेकर बड़े होने तक बहुत कुछ सिखाया जाता है
मम्मियाँ, दादियाँ, समाज, सोसाइटी बहुत कुछ हमारे दिमाग में डाल देता है और उन्हीं बिलीफ सिस्टम को लेकर हम अपनी परवरिश लेकर यहाँ तक पहुँचते हैं और वही कारण है कि हम जीवन में खुश नहीं रह पाते क्योंकि बहुत कुछ पकड़ा होता है। अगर आपको मैं यहाँ से बोलूँ कि आपको ट्रेवल करके जाना है दिल्ली तक, अगर आप ट्रेन से जाएंगे, आप बस से जाएंगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा आप कितने किलो वजन लेके जा रहे हैं, आप कितने भी ले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन if I ask you that you have to go and travel by air to Delhi, then what will happen? Then what you will do? So she's again intelligent. You have a limit to carry because you are flying. If you are flying, then you have to be light. The same thing holds good for life. अपने आप को अंदर से हल्का रखो, बहुत हल्का, क्योंकि आप जैसे पढ़ाई कर रहे हो, आपको अपना भविष्य बनाना है, जीवन में टारगेट सेट करना है। हम किस चीज में पढ़ जाते हैं कि दिल टूट गया, ये हो गया, वो हो गया। Nothing is permanent in this life. The time flies by. आज जो है वो कल नहीं होगा। आपके जीवन में जो होना है वो होकर ही रहेगा। I believe and have faith in the next chapter of life because I trust the author. He is God. अगर आपने उससे एक ऐसा रिश्ता बना लिया, if I sum up the whole thing, एक बहुत खूबसूरत से वर्ड में इस पूरी बात को अगर समराइज करना चाहूं, तो ऐसा कौन सा इमोशन है दुनिया का जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, जिसके बिना हम इस जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते? सबसे खूबसूरत इमोशन क्या है? जोर से बोलिए, जोर से जोर से। प्यार, प्यार, आपने बोला अभी, सब क्लैपिंग हो रहा है। अगर इंसान के दिल में प्यार है, प्रेम है, हम लोग जब प्यार की परिभाषा सोचते हैं तो बहुत ही सीमित ही सोच रखते हैं कि स्त्री पुरुष का प्रेम हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो सकता है, पति पत्नी का हो सकता है, लेकिन प्रेम और प्यार है सिर्फ कहीं ऊपर है, कहीं ऊपर। अगर जिसके हृदय में प्रेम है, प्यार है, वो प्रेम उस परमात्मा के लिए, उस सर्वशक्तिमान के लिए। हर इंसान में आपको अगर भगवान दिखता है तो आपको स्लाइड दिखाएंगे, एक इसको लाइटिंग को कम करते हैं, तो then you can actually achieve your self actualization and the journey of self realization just by very very simple steps of life. अगर पिछली स्लाइड में आप देखें, आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा? Can you see the slide on the stage? कुछ आपको ड्रम्स रखे हुए दिखाई दे रहे? उसमें एक ड्रम आपको अलग लग रहा होगा, क्या कर रहा है ड्रम? क्या कर रहा है? उसकी आंखें कितनी है? दांत कितना है? अगर जिंदगी की कबाड़ में ये ड्रम एक आंख और एक दांत से हंस सकता है तो हम क्यों नहीं हंस सकते, हम क्यों नहीं मुस्कुरा सकते? तो जरा जोर से मुस्कुरा के दिखाइए। कहते हैं कि मुस्कुराहट आपके चेहरे का वो दर्पण है जो ये बताता है कि आपका दिल आपके पास है। मुस्कुराहट आपके चेहरे का वो दर्पण है जो बताता है कि आपका दिल आपके पास है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा स्माइल करना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। फेक इट टिल यू मेक इट। सोच सोच मत बजाओ, बजा नहीं तो खुल के बजा पाएंगे। So it all boils down to this कि don't give the remote control of your life to others. जो आपके कंट्रोल में चीजें हैं, आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, control them and don't try to control others. You will be happy. Exercise. As I told you, I want to be the fittest Asian woman. And there was a time when I was this heavy because I was bedridden for months and months together. And now I've really reduced down and the journey is still going on. हम लोग कभी पढ़ाई में, कभी चिंताओं में इतने व्यस्त हो जाते हैं तो रात को अक्सर हमारी नींदें टूटती हैं। तो जितना चैन और सुकून से आप सो सकते हैं जीवन में, तो वो जीवन का असली मायना है। तो दिन भर आप पीछे आते हैं पैसों के, पढ़ाई के, सब चीजों के, लेकिन सुकून की नींद अगर नहीं सो सकते तो कोई फायदा नहीं। Spend more time with friends and families. कहते हैं कि जमीन अच्छी है, आसमान अच्छा है, लेकिन मुझे सुकून है कि मेरी हवेली तेरे महल से अच्छी है। जो है, जितना है उसमें खुश है, और अपने सगे संबंधियों के अलावा जो भी हमें लाइफ में मिलते हैं लोग, वो भी हमारे अपने हैं, सब अपने हैं। जितनी देर जिसके साथ बिताते हो बहुत खुशी से बिताओ, प्रेम से बिताओ एंड एंजॉय देयर कंपनी। गेट आउटसाइड मोड। आप एक सेकंड के लिए अपनी सीट पे बैठ के ऐसे आप करें और गहरी गहरी सांसें लें और डीप ब्रेथ इन एंड आउट।
इन एंड आउट। बंद कमरे में करने में उतना मजा नहीं आता, अगर जंगल में, पहाड़ी में, खुले में करेंगे, then you will really realize the importance of being out. Help others. This is a very very important point. आप ये देख रहे होंगे कि ये ऐसे ऐसे रिमोट एरियाज हैं जहां पे जाकर के मैंने ऐसी ऐसी महिलाओं की सहायता की जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ट्राइबल वुमेन ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ऐसे गांव हैं जहां पे हाथी आके गांव में घरों को तोड़ देते हैं, अंधेरा है, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। So I made it a point कि wherever I go, I help people. So the tribal areas of North East, ऊपर हैंडीकैप बच्चे हैं जो मेंटली रिटायर्ड हैं, राइट साइड में वो कॉलेज की छात्राएं हैं जिनके कॉलेज में आसाम का एक गांव है जहाँ पे इंग्लिश पढ़ाने के लिए टीचर्स भी उपलब्ध नहीं है। So I interacted with them and inspired them. ये वो जंगल गांव है जहाँ पे आप देख रहे होंगे पहनावे से, मेखला ही पहनावा है आसाम का। So I'm really grateful to CRPF, to this organization कि मुझे ऐसी ऐसी जगहों पे काम करने और ड्यूटी करने का मौका मिला। लेकिन ये सब जो काम मैं करती हूँ आपके बीच आई हूँ, although I have the responsibility of so many things, but I'm here because I want to share and transform this mantra of happiness to as many souls as possible in the world. ये अनाथालय है। Set goals in your life. जितने अच्छे आपके goals set होंगे, आप लाइफ में उनको अचीव करोगे। क्योंकि हम कभी अगर एक जगह मतलब एक रस्सी से बंध के रह जाएंगे, हम कभी ग्रो नहीं कर सकते। मैंने आपको बोला कि आपको लाइफ में उड़ना तो छोड़ना पड़ेगा। जो भी चीजें आपकी उड़ान को रोक रही हैं, जो भी व्यक्ति, चाहे वो प्रेम हो, चाहे मोह हो, चाहे अटैचमेंट हो, उसको छोड़ के जब आप उड़ेंगे तो आपको जीवन का मजा आएगा। बिकॉज देयर इज ओनली वन लाइफ टू लिव। अगर उसी एक जीवन में आपने सब कुछ अचीव नहीं किया तो उस जीवन का कोई फायदा ही नहीं है, निरर्थक है ये जीवन। एक्सेप्ट योरसेल्फ द वे यू आर। There are just few alphabets of happiness. Avoid boring company, don't entertain fools. Go for high ideas and just keep a friend like me. Never overlook the poor, quit reading the silly tales, tune yourself to victory and we expect you to zoom ahead of life. And the most important thing in the last is be thankful and grateful for everything you got. कहते हैं कि हाथों की लकीरों पर भरोसा मत करना क्योंकि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, जिनके हाथ नहीं होते। And in the last, I would sum up by saying very beautiful line. एक लास्ट में आपको बात कहना चाहूंगी जो मैंने जीवन में करी। मैंने बहुत ज्यादा कुछ नहीं बदला जीवन में, सिर्फ एक चीज बदली। I stopped thinking negative and I started replacing all my negative thoughts by positive thoughts. किसी ने लाइफ में कुछ गलत किया, गलत कहा, आई स्टार्टेड थिंकिंग पॉजिटिव अबाउट देम और वही इंसान हमें दुनिया का सबसे अच्छा इंसान लगने लगा। तो जो भी चीज आपको लगती है कि नेगेटिव है, उस चीज को बदलने के बदले उसके प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलिए, अपने नजरिए को बदलिए। तो सम ऑफ द होल प्रेजेंटेशन, सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की, जी हाँ, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त, सिर्फ दिशाएं बदलिए, मंजिलें खुद ब खुद मिल जाएंगी, मंजिलें खुद ब खुद मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। Thank you, ma'am, for bringing the inaugural session to its desired pinnacle. We, Team Soul and Symphony, pay our gratitude to our constellation of speakers, galaxy of guests, our comprehensive organizing team for bringing the conference together in terms of visualization, actualization, and execution. मन के अंदर, मन के बाहर, भटका आत्मा की खोज में, मन के अंदर, मन के बाहर, भटका आत्मा की खोज में, जल में गए, आकाश में गए और ढूंढा भोज में। कर्म में है, ध्यान में है, योग में, वियोग में,
कर्म में है, ध्यान में है, योग में, वियोग में, पंचतंत्र से है सीखा, सब प्रकट है सोच में, सब प्रकट है सोच में. We shall all proceed for tea and assemble here again in 15 minutes for the panel discussion on self and creativity, where we host another set of creative stars and take a plunge into newer modes of finding the symphony of the soul. Thank you. We meet here again in 15 minutes. I would request the audience to please note that we meet here again in 15 minutes for session 2. Thank you.